Welcome to this world-exclusive edition of DD Dialogue, which we bring to you from Midtown, Manhattan. And behind me, you can see the very iconic Hudson Rail Yard building. And this particular edition of DD Dialogue, we're going to get an insight what really makes this visit of Prime Minister Narendra Modi the most special one. And I have with me a handful of Indian-American diaspora community who have traveled from different parts of the United States of America to New York to be part of this show on Indian national news broadcaster Doordarshan. Let me have the pleasure of introducing Mr. Anil Bansal. He is the former chairman and founder of the first Indian origin-owned bank in America. Such a pleasure having to meet you in person, Mr. Bansal. Thank you for joining us. Also welcoming Kenny Desai. He's an entrepreneur and philanthropist and also president of FIA. And by the way, he's also associated with the big ticket event जो कि Ronald Reagan Center में होने जा रहा है, diaspora event. हम उसके बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इस इवेंट के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चर्चा हो रही है। आलोक कुमार हमारे साथ मौजूद है। आलोक कुमार एफआईए के मेंबर है, बोर्ड मेंबर है और बिहार फाउंडेशन के चेयरमैन है। हमारे साथ मोहम्मद फारूकी साहब है। मोहम्मद फारूकी एंटरप्रेन्योर है, एफआईए मेंबर है और मोदी जी के कहा जाता है अगर इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी की बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त हार्डकोर फैन है। और स्वागत करेंगे चांद कुमावत का। आप चेयरमैन है मनीष मीडिया के, आप पब्लिशर भी हैं और आप मोदी जी को आपके मन में है कि आप ये किताब देंगे और मोदी जी को आप ये किताब अभी प्रस्तुत करेंगे जब मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आएंगे। मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपसे। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू। There are two clearly aspects of Prime Minister Modi's visit, the symbolic aspect and the substantive aspect. But first, let's talk about the symbolic one. This is not for the first time that he's coming here. This is not for the first time कि आप लोग प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे यहाँ पे US की धरती पे. लेकिन before even he touches down in New York or United States of America, it has already created a tremendous amount of buzz and headlines. What makes this so very significant from the symbolic point of view? So I think the first time when he had come, that was an establishment of relationship because, as you know, India and US were not best of friends. So I think the first visit he came, he provided the first level of friendship. So it became an open dialogue and there was a relationship. Now things have changed a little bit. I think we have elevated quite a bit from initial dating, as you could say. Now we are talking about real dollars and cents. I think Indian economy is growing and US can see that what Modi ji had said at that time about building the infrastructure, really welcoming the American companies to be part of India growth, he has shown it. So now he is coming with definitely certain amount of strength and now he can come and meet, as he is planning to do. Is it vice versa also? America being an integral part of India's growth story and vice versa, India being an integral part of America's growth story? I think you are absolutely right. That was my point because US, as you know, had neglected India and they had chosen China as their primary partner because of the large market, as US saw. But now they want India to counter the expansionist designs of China. Right. So China has definitely shown their cards now, and US is I don't want to use the word scared, but they're worried. They're concerned. And I think US and India would have been a natural partners, natural friends. Both are democracy, both are very legal, legal systems are very similar. And you can see that Indians in America have really integrated extremely well. As you know, 20% of the CEOs are Indians and stuff. And the bigger thought behind that is that US companies in India are welcome. As you know, for example, YouTube, Netflix, Google, etc. They were thrown out of China. They were not allowed to go in there. Okay. So clearly, financial is a major part of it. Indian professionals, IT professionals, Indian Americans, they are at the top of their game, especially when you talk about the IT sector. But substantive part की भी चर्चा होगी, उसके अलावा जो हम symbolism की बात कर रहे हैं और रोनल्ड रेगन सेंटर में इस बार क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, क्योंकि मेडिसन स्क्वायर में तो ऐसा इतिहास रचा कि लोग अभी भी उसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या ये उससे भी बड़ा इवेंट होने वाला है?
ये उससे भी बड़ा, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, लेकिन ये जो है पूरा 3 days विजिट है ऑन अ फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन. वी हैव वर्क वेरी क्लोजली with the government of India and here local officials. We represent the community. We spread into the 8 states, and this is a very historical event for our beloved Prime Minister Modi, and community में इतना thrill है. So इस बार इतने थ्रिल क्यों है? because this is a visit, is a state visit, is a historical visit, and the people have traveled in the last 10 years. There is a big change in India after 65 years, rapid change of India, the growth, and the people of the NRI people who feel so pride about our Prime Minister Modi. For them, some of the senior citizens who live here, their mind, he is like a Yug Purush, is like a god. When I talk to certain people, they prayer for him that he live long life. And ओके देसाई जी, लेकिन आपने मेरे उस सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया. रूरल रेगन सेंटर में इस बार क्या कुछ धमाल होने वाला है, क्या धमाका होने वाला है? वो सही बात है, लेकिन ये जो मैं क्या सोचने वाला हूँ कि ये जो विजिट वाला है, उसमें जो ये जो यूनाइटेड नेशन में जब आएंगे, जो योगा सब करेंगे, उसका ये जो माध्यम है, he himself will doing yoga, right? That bringing 144 countries together, all the the chief of the 144 countries with the United Nations, that we have prepped a lot of stuff about the Narendra Modi ji. That shows the Vasudhaiva Kutumbakam is a family that he wants lift entire world together, prosperity, love, peace, harmony. और बाद में जो व्हाइट हाउस का जो इवेंट है, जो पूरी कम्युनिटी हम साथ लेके 2000 लोग इधर से जाने वाले हैं. पूरा हमने पूरा जोश के साथ तैयारी किया है. ये तैयारियां थोड़ा सा इनके बारे में बताइए. वॉशिंगटन डीसी के जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, वहाँ तो बिल्कुल ही फेस्टिवल वाला माहौल है. जी बिल्कुल, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो एक फेस्टिविटी जैसा पूरा हो जाता है. बिकॉज उनका क्या है, जो ये लास्ट 9 years के अंदर जो चेंजेस आए इंडिया का प्रेजेंटेशन, इंडिया के बारे में सोचना, एंड द चेंजेस यहाँ पे भी देखा कि द सो मेनी कंपनी सीईओज आर द इंडियंस ऑरिजिन. तो लोगों के बीच में और कुछ हो रहा है कि क्या क्या मोदी जी करते हैं. मोदी जब भी आते हैं यूएसए तो कुछ नया एनआरआई के लिए करते हैं. कभी ओसीआई का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कुछ ना कुछ एक नया चीज़ ला के देते हैं. दिस ईयर लाइक दिस टाइम की व्हाइट हाउस हिस्टोरिक इवेंट है, क्योंकि हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री बहुत बार गए हैं वहाँ पे एज ए गेस्ट, लेकिन कम्युनिटी मेंबर व्हाइट हाउस के अंदर नहीं गए हैं. इस बार पहली दफ़ा हो रही है कि कम्युनिटी मेंबर भी जाएंगे साथ में और उस इवेंट का हिस्सेदार बनेंगे. एंड साथ ही साथ जो सेकेंड टाइम लाइक ये हिस्टोरिक है कि दोनों सेशन को कोई प्राइम मिनिस्टर 2 बार कर रहे हैं. सो दैट्स अमेजिंग थिंग. और हम लोग एज ए कम्युनिटी यहाँ पे इतना इंथो है कि अभी कल आप देखेंगे यहाँ पे 4 बजे इसी हडसन रिवर के ऊपर मोदी जी का, बाइडेन साहब का जो है एकदम से बड़ा सा पोस्टर लहराता हुआ दिखेगा आपको. बड़ा गुड फील होगा. देन वी हैव द एक एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग जो माला बना रहे हैं 20 feet फ्लावर्स का, उम्मीद करते हैं कि वो पहने और एकदम से मतलब जिससे जैसे एक फ्लावर्स खिलता रहते वैसे ही मोदी जी खिलते रहे. एंड दैट्स द कम्युनिटीज एट ऑल टुगेदर विशेष हम लोगों का. फारूकी साहब, तो क्या खास बात आप करने वाले हैं इस विजिट में? It's a pleasure to be here, to be sharing the dais with Mr. Bansal, Mr. Kenny, and Mr. Alok. And it has been. I have been in US for 16 years, and as an entrepreneur, मैंने मोदी जी के बारे में वो चीज़ देखी कि I saw him from फर्श to अर्श. तो अल्लाह जिसको इज्जत देता है तो उसको वो शायद कुरान में भी है, वो इज़्ज़ो मन तो शाह व ज़िल्ल मन तो शाह. इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की, ज़िल्लत देने वाली ज़ात भी अल्लाह की. तो एक इंसान ही स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर एंड वेयर ही हैज़ कम कि I can't force someone to love me. The amount of people that you see here and all over the world where Mr. Modi goes, there is some aura, there is some connection, right? So I am as a fan, as I go looking at what story he has been able to communicate. The time for India has come, and the 9 years that I have been seeing Mr. Modi come and go. Okay. As a marketer, I have seen how he's been able to sell the India story. Okay. The growth story. That's an important point. Selling, not the selling, but
turning India into brand India. You know, that is important. Turning India into brand India and taking the brand India to the rest of the world. You said you have been staying here for the last 16 years and 9 साल से पहले अब comparison हाँ. So जब पहले before Modi and after Modi, there are two Indias. Before Modi, there were a lot of prime ministers who came in, they did their thing and they went back. But after Modi, what he has rejuvenated the entire mass following. जैसे एक ज़माने में तेंदुलकर होता था, तो we used to have a hope कि इंडिया मैच जीतेगी. Today when we see Modi, we say यार मोदी है तो मुमकिन है. लेकिन वेस्ट का नजरिया, क्योंकि हम अमेरिका में हैं तो हम अमेरिका की ही बात करेंगे, नजरिया पिछले 9 साल में कैसे बदला? Well, see, a strong country like India needs a strong leader, right? Okay. The largest democracy is meeting the oldest democracy. Okay. So now we are here, two common friends. So the point is 1.3 billion people. America, we have 3 Americas within India, if you think about it, market-wise. So Modi ji has been able to sell the story and tell the people, look, India is growing. The amount of development that is happening and the amount of travel that he has done, which is what amazes me and surprises me at that age, to be able to travel 124 countries and be able to brand India the way we should have been branded long back, but well, हर चीज का वक्त आता है तो अब इंडिया का वक्त है. वे रहा है लेकिन दुरुस्त है. जी कुमावत जी, किताब जो आप प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को जो आप प्रस्तुत करने वाले, इस किताब के बारे में बताइए. और आप कुमावत जी जयपुर से आए हैं? जयपुर से मैं खास मोदी साहब की विजिट के लिए आया हूँ. मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मोदी साहब की जो पहली विजिट 2014 में जो हुई थी, उस समय भी मोदी साहब ने हमारी एक किताब का विमोचन किया था. और आज हम जो उनका सेकंड टेन्योर की, जो मेरे हिसाब से लास्ट विजिट जो है सेकंड टेन्योर की, उसमें भी हमने मोदी साहब के 9 साल की उपलब्धियों और मोदी साहब ने जो रिसेंट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का जो उद्घाटन किया, उसके अलावा मोदी साहब ने जो 124 विदेश यात्राएं की, उस पर भी हमने विशेष रूप से बुक तैयार की है, जो हम सभी भारतीय लोगों को रीगल सेंटर में 23 तारीख को देने जा रहे हैं और इसको मोदी साहब को भेंट किया जाएगा. और हमें इतनी खुशी है कि जो मोदी साहब ने विश्व में भारत का नाम बनाया है और भारतीय पासपोर्ट या भारतीय लोगों की जो दुनिया में इज्जत कायम हुई है, उसके लिए हम कायल हैं. और हम उसी के लिए उनको साधुवाद देने के लिए हमने एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट बना के मोदी साहब के स्वागत के लिए लेकर विशेष तौर से जयपुर से आए. India's growth story, rather India's ascent, and this is one of the most uplifting story, the way American Biden administration has literally rolled out red carpet for Indian Prime Minister. The larger message that perhaps the Biden administration wants to send across to the world. I think India and US are natural partners, and United States has realized that in order to counter China, they really need India. So let's face it, US is throwing the carpet, and after realizing that India is a much better partner than China could be. And so that's what's happening. And you had asked about Ronald Reagan Center as to what the difference is. So there is a major difference. The first time when Modi ji had come, that was to excite us. It was a more, what I would call a marketing visit. He recruited all of us to talk about India and to feel good about India and talk about it, be proud. Whereas this time in Reagan Center, it's not a marketing event. It's actually, rather than community leaders, it's dominated by the business people of US. As you know, the main person who is organizing the Ronald Reagan Center evening on 23rd is US-India Financial Partnership Organization. So all the CEOs are invited. Yes. So yes, there will be some community leaders, but the whole place is dominated by the business leaders. Okay, if you could also, now that you're talking about it, elaborate more about the business deliverables and the business component in this particular visit. So there are many areas. For example, there is a conversation about energy. Yes. There is a talk about solar energy, for example, wind energy, etc. Let's face it,
US as the technology and US as the capital, and India is a market as well as a manufacturing hub. So they're really perfect together, and that's just one area of what I'm talking about. So what you're going to see is an incredible conversation about financial aspect of investment in India and what India will help in US achieving for their future growth. Okay, great, absolutely. Mr. Desai, that question which we really would want to understand from you, what has really changed? The American warming of ties जो ये बात कर रहे हैं, Pentagon statement says that this particular visit is poised to set new benchmark, quote unquote, as far as bilateral ties between India and US is concerned. आपने पूरी trajectory देखी है, क्या changes आप देख रहे हैं? So when you see that everyone say about when he came like 9 years ago, and 3-4 visit already made in 14th, 19th, and this one will be the most remarkable historical visit. There is a change, economic change is there, technology change is there, all the relationship between all the Jalvayu or the defense side, which is very important tie that India, where the geographically sitting in Asia, that we are very critical on top China and Pakistan, right? So those kind of a situation where we are, and today the growth of the India on the business side, economical side, and all the youngsters in India, we are 70% youngster, the brain of the entire world sitting in India. And that's what we're seeing here, the 20% CEO even today in the US is totally surprised that all the big corporation, they want to hire an Indian CEO. आपने बहुत interesting बात कही, the brains of the entire, what did you say? Entire world. Brains of the entire world, or rather the 20% of the brains of the entire world are sitting here in America, and इनका इशारा obviously Indian Americans की तरफ है, लेकिन America इसको acknowledge भी करता है. इस कंट्री की यही बहुत बड़ी ब्यूटी है सकल जी कि यदि आप में क्वालिटी है, nobody will stop you. They will let you raise as much you can, and you can achieve. You will not find the discrimination in terms of if you have the quality. There is no jack will work on the top position like where the rest of the world. It may be possible, but here it's not possible. That's the beauty of the America. Indians are preferred? Because Indian are, as Mr. Desai said, they are the intelligent, at the same time a very smart working guys. No. Americans are acknowledging that. That's what I'm asking. Yes, they are very much acknowledging. Otherwise, the board, any company you take, the boards all are the American. Local Americans, they select them. तो acknowledge करते हैं तभी तो ये भी आपका एक बदलाव है पिछले 9 सालों? ये बदलाव एज ए कंट्री के हिसाब से आई डोंट फील दैट बिकॉज द इंडिविजुअल एफर्ट उसकी मतलब तरक्की है एंड देन पीपल सी दैट oh this is the guy, oh his root is from India, let's explore, that's the route they go and that's the way the country. So Prime Minister Narendra Modi and that change in perception as far as how America looks at India or Americans look at Indians, Farooqi Sahab, that has changed tremendously? Yes, it has changed tremendously. अगर आप last 10 साल में देखेंगे, 10-15 साल में, the amount of CEOs that we have here, the amount of Indians leading multinationals, multi-corporations within the United States, आपको I don't think you'll find it in anywhere in any part of the world. So America has realized India is the IT capital of the world, and if they want to rule the world, America needs India just as much as India needs America. But who needs more? Right now, America needs India more. दिल मांगे मोर. आज बाइडेन साहब ने विश्व बैंक के लिए अजय बंगला सबको चुना. आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी है. आज उस जगह पे पहुंचना भारतीयों का ये एक शुभ संकेत है कि आने वाले समय में भी अमेरिका में कई पोस्टों पर भारतीय मूल के लोग देखे जाएंगे. जो भारतीय मूल के लोग होते हैं वो कूल होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, मेहनती होते हैं, सामाजिक बहुत ज़्यादा होते हैं. इस वजह से यहाँ एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है हम लोगों का. ये 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है अमेरिका में, वहाँ एक भारतीय इंडियन भी 3 इंडियन प्रेसिडेंट की रेस में खड़ा है. तो आप सोचो कि इन अमेरिका इज पॉसिबल
And what I am seeing in the future, even one day you will see the Indian origin president like what we see in Britain will be sitting in America very soon. When you can have a vice president. And today even Kamala Harris could be a president. So that will be a remarkable change. What we seeing like दूध में शक्कर मिल जाती है, जो पूरा वर्ल्ड में जो मैं सोच रहा हूँ, दो कंट्री पूरे साथ मिलके पूरा विश्व जगत में धमाका मचाएगी. ये सेंचुरी पूरा इंडिया की है. मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया विल बी वन ऑफ द लीडिंग सुपर पावर. So जो ये बात होती है विश्व गुरु भारत, हाँ, विश्व गुरु की बात कर रहा हूँ मैं. सो ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये सब लोग विश्व गुरु उसको जो नया इल्काब दिया है, जो पूरे कॉमन लोगों की बात में सोचो तो उसके लिए तो ये बहुत बहुत बड़ा आदमी है. सो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ भी किया है, जो चेंज किया है, पूरा पूरा देखो एक आदमी क्या क्या चेंज कर सकता है. तो ये बहुत हमारा ये नसीब की बात है कि हमारे देश में एक ऐसा आदमी का जन्म हुआ है. अब देखो ये पूरे जीसस क्रिस्ट आए, कृष्ण आए, राम भगवान आए, राइट. सो ये हम सोचते नहीं है, लेकिन ऐसा ही सब मानते हैं. जब आदमी चला जाता है बाद में उसकी गुणगान होती है. ये जो प्राइम मिनिस्टर है उसने जो करके जाएगा वो पूरा 100 साल तक ये रहेगा. So want to add to that legacy? Oh, absolutely. There is no question about it. I think it has been said many times before. I think Indians feel much more confident. They feel much more proud than ever before, and single reason being Modi ji. There is no question about that. And when you are confident, you're proud, you tend to do better. You walk into a room with power. With your head absolutely high, and I'm from IIT, and as you know, Clinton had made IIT a brand name in US by talking about it. So even when I go there and say I'm from IIT, when they ask, they treat you differently. So I think the same thing is happening on a wider scale with Indians. As you know, Indians are the richest minority in US. And influential also? Influential, as we know, to so many positions. We are less than 1% of the population, but we provide over 6.5% of the taxes. Okay. So the financial power is there, and all the people here who are well-to-do are ready to put their money for India. This is our contribution to India, and I think that is what is binding. So we have the kind of glue which is binding the two and bringing the two countries together. Excellent. One final comment from all of you. क्या मोदी जी के लिए आपका मैसेज, और जितने भी हिंदुस्तानी देश भर से या दुनिया भर से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर्स यूएसए विजिट, आप लोगों का क्या संदेश? मेरे ख्याल से तो हम प्रेयर करते हैं ऑलमाइटी गॉड, लॉन्ग लिव मोदी जी. इज आवर लीडर, इज आवर नेशनल लीडर, वर्ल्ड लीडर, and I wish him all the best, that he will make a biggest movement in the world. And for my end, it's our leader, our national leader, and I'm so proud. मेरा छाती गर्व से फूल रहा है कि मोदी जी इस कंट्री में आ रहे हैं और पूरा कम्युनिटी उसके साथ है. फाइनल काउंटडाउन ऑलरेडी किक स्टार्टेड. सो मेरा तो एक ही इच्छा है कि मोदी जी का जो एक ड्रीम है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस करे, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं एंड कि अगले बार पुनः प्रधानमंत्री बने और 5 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा कर दें. I am looking forward to meeting Mr. Modi, and also I wish him all the best, good luck, the way he's been promoting and marketing our country. It's a pride, matter of honor for all of us as Indians representing India within the United States. And what FIA has done for the last 50 years, it's 50 years, is commendable. आज इंडिया की रिप्रेजेंटेशन विद स्पेशली इन ट्राई स्टेट जितनी FIA ने काम किया है, मतलब आई हैव सीन लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, I have never seen an organization so bindas working for the cause of the country, just like. So ये last countdown है, final countdown है before Modi ji touches down in New York. Yes, looking forward to meet him tomorrow. मोदी जी ने जो भारत का और अमेरिका का जो रिश्ते में जो प्रगाढ़ता लाए हैं, ईश्वर उनको सफलता दे और भारत और अमेरिका के रिश्ते दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का ये एक मिलन
भविष्य में नई ऊंचाइयां ले जाएगा। So, fine. भारतवासियों से यही है कि हम अमेरिका में तो रहते हैं लेकिन हमारा दिल हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में है, एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल एंड विल कंटिन्यू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अपलिफ्ट आवर होल सोसाइटी, कि इंडिया में और भी तरक्की हो और अच्छा हो और सब लोग खुशहाली से और सेहत से रहें। ये लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, इंटरनेशनल योगा डे इस बार का जो एडिशन है, 9th edition, I mean this is also unprecedented and historical because Indian Prime Minister is going to lead the International Yoga Day. So the message there that India's soft power is world beating. Absolutely. As you know, yoga is not Indian anymore. It's very internationally accepted. So that's an incredible soft power, because all those millions of people who do yoga every day, you know, they have what it takes to be Indian. Okay, all right. So the messaging, of course, not only Vasudeva Kutumbakam, but also everything here is now going to be the India way. When I say everything, I mean the way the Indian diaspora is geared up to welcome their leader, and they're calling him the world leader, of course. The fact that we're going to witness what really happens when we see the coming together of the two largest and the oldest democracies. International Yoga Day, the 9th edition, is definitely going to be very special. But at the same time, this whole visit of Prime Minister Narendra Modi to United States of America is all the more special, symbolically and also substantively. With that, I'm going to wrap up this very, very exclusive and world exclusive edition of DD Dialogue, which we bring to you from Manhattan Towers here. And I'm going to quickly thank all my Indian American diaspora members who have traveled from different parts of America to be part of the show. Thank you very much, all of you. And as they say, the India way. Signing off from New York. Thank you.